It starts, sir. Astos, sir, now you can continue. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I welcome all the participants to the second day of this 1 week online certification course on computational mathematics software. The software are Mathematica Maxima and R. I request all the participants to note down their doubts and questions. The chat box will be enabled at the end of the session, and you can type your questions there. Now I request Dr. Professor D.S. Tuteza to start today's session. Thank you, Dr. Ashutosh Meena. Thank you, sir. Thank you very much. Let me start again with the maxima only. Just hold. If I switch off the camera, that will be better. I don't know how to do it. Let me make it first. Okay, stop it. Right. So is my screen visible? Yes, sir. You can see WX maxima written? Yes, it's there, sir. So we were doing conjectures. We started with the conjectures yesterday, and we did Euler's conjecture. So just a small, revision. So let's see what is Euler conjecture. Euler conjecture says that yesterday we have already written that if n square plus n plus 41 can generate prime numbers, but up to a certain limit. So at that time, Euler did it manually, and we are doing it with this. And he said that many prime numbers can be generated, which was refuted, but still we can find that yes, some numbers are, for some values of n, prime numbers are generated. So I'm going to make this program again, and we will build up little one. Little bit, not much, because most of the things we did earlier in this regard. So how to begin this? We Euler X, we make this symbol is used for function. So whenever we want to define a function, we use colon is equal to in maxima. So you put circular brackets for n is equal to 1 is equal to is written like this, and this is through. True we write like not the complete spelling, we write like true. We have three forms of do loop. One is true, other is while, and third is unless. We also use for also, but rarely it is used. So through X, do. Now here comes the main command. Yesterday I hope I gave you t n square plus n plus 41. So compute this if prime p, this command prime p, you know that it checks whether the number inside the argument is a prime number, then it will tell you true or false. I can give you an example here. Prime, say I'm checking for 9. So prime p 9, it is false. And if I write prime p7, it is true. So p means it checks whether it is correct or not. So prime pt, if this is true, then fine. You can write then print n t. The value, when you substitute n in this, the value you get will be printed as t, and then you can print it as print here that it's a prime. Whatever language you want to write, you can write it. And else you may write that print not a prime, not. So here also you can put n and t in n and t inside this. So you get this complete. Let me break it. I'll break this because it's going too long. So I can break this program like this, do, or even if you want, I break it little bit after do. Let me break.
Okay. So for n is equal to 1 through x, it will find out this if I need to have a bracket here after if or not required, if prime p, then के बीच में space है, then print t and t, else print. Okay. Now let's see if the brackets are right or not. Please check it. Print का p छोटा होना चाहिए. All right. Then let's come here, bracket up till this point, and this is bracket for. It seems to be. It is fine. So this particular program, let us run this particular program. Euler, say I take 10 up till 10. So for 1, it is 43. The number which you generate from here, n square plus n plus 41, generates you 43. It goes on like this. So you get up till 10, all are prime. And if you go beyond, say, let's go to 40. Let's see what happens at 40. So at 40, see the last number, 1681, it is not a prime. So that was a conjecture given by the Euler, which said that it does not require a proof. It is not that strong, but for programming purposes, it is good. You learn from here that whether this polynomial can generate prime numbers or not. So I will make it smaller, and then so that you get ample space on your screen. Okay. So that was Euler. Now, see, basically, we are supposed to teach our students that our commands, see, host of commands should be available. So you see, Euler P. Why I'm saying Euler P? See, normally, if you have even P, you replace it by even P. What does it mean? Even P 10. It is true. Even P means whether it is even or not. So they call it as a question. So even P 10 is even. Similarly, you have odd P also a command. Odd P also a command. It says that it is false. So can you generate Euler P, wherein what it can do is it can tell you whether it is prime or not. So we can write this. Hey, how we will write this? Euler P x. You pass a number into it. All right. You pass a number into it, and then you write is equal to block, and then you write, you find out t is your n square plus n plus 41. So you get value of t here. Now I'm going to check it, whether it is, so I put a comma. Inside the block, you need not put any semicolon or dollar sign. Inside the block, you can separate different command by using comma. So block, and then you write this, and then you ask the question, if prime p, and here it goes t, if it is true, then return what it should return. It should return. Otherwise, it should return false. Even if you don't write it, it won't matter. It will return false. Anyway, being beginner, it is fine to write like. Okay, so let us run this. Euler P is running, so I will put it here a dollar sign so that this is hidden. So now your Euler P. Say I want to know about the 41. T n square plus what it says. Acha, here you have to write n because the variable which we are passing is not x, it is n. So it is false. Now, if you see, we have already checked it for 39. What was the value for 39? It was true. So it is. Euler P is a function which you can, if you get the chance to write, say, code for maxima, then you can always share that. Euler P means that is checking whether it is a Euler polynomial gives a. I make another function out of this, which will be interesting. Control C, just copy it. And I'm going to change a little bit here, make it Euler Q.
All right. And everything remains same. Only thing you have to do is return 1 and return 0. If it is prime, return 1, otherwise return 0. Let's see what happens. Euler Q and say I take 39. So what should be the answer? It should be 1. Yes, it is giving 1. Fine. So that's working. Let me save it. Otherwise, I will lose it sometime. So today is 2302 FD. Your previous file is also with me. I'll send it. So I save it. Now I'm going to see what exactly is happening even after 40. I told you that I can write a program from X to Y. This variation we have done earlier. Now, if you revise it, you will get to know. But let's see through graphical. So what I will do is I will make certain set of points. Some hands have been raised. Just hold on. Shreya, just hold on. Let me complete this part and then I'll come. So make list T, and then what I do is Euler Q, and here I write Euler Q T. I pass this argument T varying from say 1 to 10. I'm taking the simple one. 1 to 10 is fine. So let's see how points are coming. You see, for n is equal to 1, it is prime. For n is equal to 2, it is prime. N is equal to 3, prime, prime, prime. It goes on. Very true. It goes on. Even let's see what happens till 45. I'm taking the smaller values. You see 17, 18, 19, but at 39 it is 1, but at 40 it becomes 0, which means that n is equal to 40, it is not prime. N is equal to 41, it is not prime. N is equal to 42, it is not prime. It is prime. And similarly, it goes on 43, 1, 44, 0. You understand what exactly I want to do. So I just hide this by putting a $sign. Now I will see that how it looks like on the graph. So WX draw 2D, I will be using, instead of plot, I will be using draw. Plot has a, when you use plot, it connects the line. So I want discrete points. For this, it is very simple to make discrete points. The command for this is very simple, points. And in the bracket, you write the points of what exactly you want to plot. That's it. So you get, see, here you see here, all the points are there. Only 41 and 44 are down. So let me make it little different so that it is visible to you. I'll make Y range from 0 and 1 ke beech mein hai, so -1 and 2, so that it is visible. And instead of 40, let's make 100. Okay. Let's see how the, yes. Now you see, what does it mean? Wherever there is 1, it means that Euler, whatever Euler said is right. If you find out the value of the polynomial at that point, you will get a prime. Wherever there is 0, it is not prime. So this, you can see that it is distributed over this whole region. It is not like that it is in a particular plane. It is all over. So you can even extend this, make it 500, and you see you will get a graph. So it is there. So you get 2 lines. Yeah. Now I'll stop for a while. If you have questions, it is fine. I'll answer it. Otherwise, I'll go for a revision of the next. That is the collards. Because yesterday we did collards, but let us do little revision. Yeah. Who was asking question? Please ask. एक बार इनको chance देना, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I'm not able to run the Euler P command. It is showing that the argument must be an integer. Euler P आपने बनाया है अपना? Yes, मैंने sir. बनाया है, ये built in नहीं है. I am Yes, creating sir. it. Can you share your screen? Sir, yes, sir. So just a second. Just a second. I have to stop it first. Okay, sir. Let me stop. Please share.
So is it showing? Yeah, just hold. Oh. Sir, it stopped working. Well, don't worry. Euler P39. Euler P39 prime P. T is equal to a. ठीक है. Euler P is equal to block. हाँ. But don't touch it. Run this program again. Euler P को एक बार run करो दोबारा से. So, and this maxima is creating a bit of a problem. Yesterday also it stopped working suddenly. It happens, when you do give some argument where it goes into infinite loop, there you will face trouble. Don't worry, you restart. यहाँ पर भी देखो तुम्हारे एक गलती है make list में you have made capital T here, it should be small t. Small t, yes sir. है ना? अभी Yes, sir. इसमें देखते हैं Euler P x block T n square plus n plus 41 if prime P T then return और इसके बीच में ठीक है true else return false. This should work. Absolutely it should work. आप एक काम करो, इससे पहले kill all करके चलाओ. Okay sir. है ना? It will run. Don't worry. अभी चलते रहो आगे. Don't worry about this. This is fine. You are doing good. ये minor mistake है, ये हम लोग बाद में भी I can solve it a little later also. Don't Okay worry. sir. Okay. Yes, Please sir. stop sharing. Thank you sir. Most welcome. We'll do it. Don't worry. You move with me. Otherwise, वो एक छोटी सी problem लेके आप वहीं रुके रह जाओगे. आगे learning बंद हो जाएगी. अभी learning fast चला दिया. Okay. So now we are going to define Collard's function. Collard's, आप लोगों को याद है? What was that Collard's? Collard's was actually, hot pole. If it is a even number, divide it by 2. If it is odd, multiply it by 3 and add 1. Go on this process. Every number will reach to 1 with a finite number of steps. Nobody could prove it. So we are trying to do it for every number. If you can find any such number where it does not converge, then your theorem will be negated, but nobody could negate it. So let us try this. हम लोग भी बना के देखते हैं. So if even px means if the number is even, then see you may write true, you may not write true. It is both are correct. If you write true, then it is also fine. Nobody will deduct marks, or it is fine. Computer science people will always object that why you are writing true. It is not required. It is redundant. So function is, if it is a even number, then return x by 2. Else return 3 into x plus 1. Okay. So you get this. All right. So your function is well defined. Let's see. I'll put a dollar sign. ये मैं इसलिए पहले डॉलर के बगैर देखता हूँ. I always check it so that if any error is there, we can see it. Otherwise बाद में error आएगा तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या है. So what is f of 4? F of 4 is 2. What is f of 9? It should come out to be 9 3s are 27 plus 1 28. Yes, it is giving 28. What should be the f of 23? It should be 69 plus 170. Fine. So f is working. I will use this function. I will not define again and again. But if I use anywhere kill, then that means this effect has to be defined again. So now I move to Collard's. I'm going to define this function Collard's. Now what I am going to do is I will be iterating again and again till I reach 1. So that was the logic. You start from 1 through, you have to go unless x is equal to 1. You go on doing like this. That was the other form of do. Unless x is equal to 1, what it should do? It should
it should do two things. First, it should find out fx and put back into x, and then go back, do it again. Then again it will find fx, put it back to the x, and go on doing like this. And then once it completes, and with that, it should also gives the output every time. Every time. That's why it is under do only. Otherwise, I should have kept outside this. So print, what it has to print? It has to print. Let's start bracket, print, and नहीं, print तो लिख दिया ना हमने, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं ये क्या चीज है, iteration है ना. So I will write, remove this, ये भी ये चाहिए. So I will write this. Oh, कितने सारे हो गए. Okay. Right. Iteration is, I put like this, a comma, and then here I gives कर देते हैं ना. It gives. इतने iterate के बाद ये मिलता, x मिल जाता. So let's see, brackets are complete or not. No, one bracket is missing. So I'll put one bracket. You see blue signal gives you that the brackets are complete. Let's see if this is fine. If any error is there, then we'll come back. ये मेरा भी hang है. So that's why make a habit of saving again and again. तो मैंने तो शुरू में सेव कर लिया था, तो मेरा ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी. See, when you have the zoom also takes lot of space. तो कहाँ सेव किया था वो हम लोगों ने, ये तो कोलार्ड्स ही गया, ज्यादा नहीं गया. कोलार्ड्स I can write again, don't worry. So we write fx is equal to block, and in the block we write what was that block में हमने क्या लिखना था, if even p x is equal to true, then return x by 2, else return 3 into x plus 1. So that's it. I will remove this also this time. ये भी हटा देंगे, है ना? If even p, then return this. Cannot assign it. It's okay. Equal to is missing. Equal to here. Put a dollar sign and hide it. So let us check f of 9. 9 is 28. Fine, absolutely. Control S. Let me save it also. Now I'm going to write Collards. So Collards function x and is equal to, and here goes block. And here you can see your code. Yesterday I wrote it. I think I wrote it in the same fashion which I am writing it today. In case it's a little different, then please ask me the question. 1, 2, and x should be replaced by fx, and then print I, and then here you write iteration gives, and then comma, and then I have here x. So here goes, so it is closed. All right, Control S. So unless what happened? Unless अच्छा इधर से हमारा for नहीं लिखा ना हमने, और I is equal to that. So you get Collards, and let's say 9. So you get the entire this. Yes, good. So first iteration gives 28, second iteration gives 14, third iteration gives 7, fourth iteration 22. Perfect. It is in order. So let me make it a smaller one. Small is 4. 4 से तो आपकी आधा हुआ, आधा से 1.
थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं 5 में थोड़े से ज्यादा. Fine, it is working. So yesterday we were trying to find out how many iterations are there. So we were caught in collapse Z. I tried this collapse Z. What mistake I was making? We'll try to remove that. For I is equal to 1, then I is equal to 1. True लेना है, unless लेना है ना, इस वाले में तो unless कर. Unless x is equal to 1, the same logic. Then what to do? Do x is equal to fx. Yeah, x is equal to fx. Now, problem is what we were facing was when I say here return I don't want to return everything, or even I write print I. Print. I was doing like this, and I said, okay, go on doing like this, and at the end, you print I. It write this. All right. And let's see. I will put it here. $sign. Then here I write collage Z. Say I write 5. हमने ऊपर किया वो. You see, it returns I. Why it is returning I? That was a big question which we were missing yesterday. Problem is, this I is a number which belongs to the loop. This I is being created by for. As soon as the purpose is over, as soon as this purpose is over, and you go out of the purpose, it does not have a value. It does not retain the value of this. Now, you must save it somewhere. So you create another variable j and put it I is equal to j. And here you must tell block that this variable j is your local variable. So now j is equal to 0, j is equal to I, and here I will print j. Let us see. You got it. So collage 5 gives you 5. If I put collage 15, you get 17. Here you can see, let us put say 9. Collage 9 is how much? Collage 19 is there. If you put 9 collage, you get 19 iteration. So I will put collage 9. Let us try to find out. It must give answer 19. Giving 19. So it is perfect. Absolutely perfect. Now just replace this print by why we return, because I don't want to print it. I just want return value. So it is returning 19. There is no echoing. This is it is working. Fine. Now I will move to the next. The same process of plotting. I'll create some points, make list, and then I have a square bracket. Starts like this, and t, comma, collage. I'm counting for every number. How many iterations are there? Let's vary t from 1 to 10. Very small one, because if you make a large one, then you have to keep sitting here till it finishes. So better is to like t varying from 1. Okay. Let's see how the output comes. Yeah. 1 for 1 it is 0, 2, 1, 3, 7. How come 3, 7? See, you begin with 3. 3 3s are 9 plus 1 10. 10 का फिर next आएगा 5. 5 का फिर next आएगा 16. 16 half 8 4 2 1. So it has 7. You see, it has created for all. You just put a $sign. We don't want to see it. Right? It is creating. It is there in the points. If you want to see it, you can write points. You can see it later on. So I have just hidden that. I know that the variable is there. Don't worry about it. Now I want to see W explore. Here I write points and in the bracket. So it will generate the क्या हुआ? It generate. It has to generate points है ना? तो square bracket में point. क्या हुआ?
Oh, sorry. It is WX, not plot. It is draw. Get this. You see, these are the points. Discrete points are there. Now, I'll take you back to Wikipedia. Wikipedia में चल के देखते हैं. उसने एक प्लॉट बनाया था, if you remember, और वो उसने समझाया भी था Collatz conjecture को. We come to that. ये वाले प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ. This red plot. I will show you in detail. You will like it. Collatz conjecture, Wikipedia. Go there, and then you can read here that what does it mean? Three times the previous term plus hot pole. n plus 1 conjecture भी इसको बोलते हैं. So I come here. You see, it has calculated n numbers varying from 1 to 10,000 and their corresponding total stopping time. Actually, ये stopping time बोल रहा है, हम iteration बोल रहे हैं, so it is all the same. It is stopping iteration. How many times it take to stop. So our graph must look like this. It has computed for more than 9,000 and 10,000 almost, but I will not do. It will take a lot of time. I'll do for a smaller, and you will get the glimpse of the graph. So let us make it say 1,000. Let's see if it gives you the same kind of. You see, you got it. Same kind. And if you increase the value, maybe पहले control save कर लेते हैं. 4,000, 5,000 ले लूं, थोड़ा time लगाएगा, पर ठीक है. हो गया. So you get the same answer. What you got in your Wikipedia. You see, this was the. So it is actually, there are 2 points from where it is converging, and it is then divergent. Okay. The statement of the problem, if the number is even, divide it by 2. If the number is odd, triple it and add. So this is called as your Collatz. This one, they could not solve it. Nobody solved it. This. Then I will move to a new problem today. This is just a problem, not any conjecture. I just wanted so that you can enjoy it. There are little integrities of programming, so I wanted to take it up. This is called as the special number. Anybody having idea of special numbers? They are the 2-digit numbers. Okay, I'm talking of 2 digits only. There may be others also. Special numbers 2-digit. The definition says that, say you have a number 28. Say you have a number 28, and you take sum of the digits. What is the sum of the digits? Sum of the digits is 10. And what is the product of the digits? Product of the digit is 16. If you add sum and product, you get 26, which is not equal to the number itself. But if it comes out to be the same, then it is a special. Let us check 29. What is the sum of the digits? 11. 9 plus 2, 11. 11, and what is the product? 2 9s are 18. 18 plus 11 is 29. So 29 is a special number. Same is the case with 39. Let us see 39. We'll find out all numbers from 10 to 100 because these are the 2-digit numbers. What are the integrities involved in this? I wanted to show it and how to program it. That's the beauty of this. So 39 means 3 plus 9, 12, and 9 3s are 27. 27 plus 12 is again 39. So this is working. So let us start. Given a number, say, I will take a simple example of 29, or even let's see 92 ki kya position hai? 9 plus 2, 11, and 9 to the 18. It is not. Okay. So you may find that certain numbers are there, certain numbers are not. So I'll take x is equal to 29. I'm just doing it for the sake of convenience. I have taken 29, but never mind. Suppose x is a number 29. Its unit digit, I have to pull it out. How to pull out unit digit?
you can use mod x10. Let's see what is the answer of this. Yeah, it fetches out 9. So this is working. Mod xu, you can take out. And how to take out 10th, the digit at the 10th place? Very easy. You can use a command called as truncate x by 10. Let us see what is the output. You see, the output is 2. So given 2-digit number, you can easily pick out uh, this. There is another way, which is if I instead of this, I use mod, and then here I write x. So instead of x, I write xu. All right. So what will be that? xu हमारा हो गया. अच्छा, xu में तो हमारा 2 आया हुआ है ना अभी, तो नहीं काम मरेगा, मुझे 20 लाना पड़ेगा यहाँ. x का नहीं, वो नहीं चलेगा, ये ट्रंकेट ठीक है, ट्रंकेट से काम सही होगा. इट यूज ट्रंकेट. ट्रंकेट. ऑलराइट. क्या हुआ? xt is equal to what happened? 2 आर्गुमेंट क्यों जा रहे हैं? Truncate x10 x by. I'm sorry. Okay, so you are able to fetch out digits separately, tens and unit place. Now I'll find sum. What is the sum? Just add xu plus xt, and you want to find product. Prod is equal to prod is equal to xu into. So I'm ready with the prod and sum. You see, the sum is 9 plus 2, 11, and 9 2s are 18. I'm ready with this. Now I will put a loop here. If x is equal to sum plus prod, if this is true, then what it should do? It should say print number is. Else print just check it if I'm doing everything right. Put a $sign, and you can replace everything with the $sign. If you want to see the steps, you go ahead with a semicolon. Okay, let's see what is the answer. It says 9 2 11 18. Number is special. 29 is special because their sum is comes or sum plus product is 29. So that's fine. It is working. You change the number here. Let us take 91. So what happens? Number is not special. If you want to play with it, you just put your number here also. It will tell you when it gives number C91 is not a special. So you remove this. The word number is not. 91 is not special. And if you want to remove this last line also, just put a $sign at last line. For every removal, you need to replace it by $sign. So I'm replacing it with $sign so that it's elegant. So 91 is not. Even you can ask your student to write a program in such a way that it reads the number. Whatever number is given by the by any user, it can check it whether it is a special or not. So this simple logic. Now I'm going to write, my standard way of writing is, whenever I see what make a program, I make its special P also. Hope that this special P is not here. Special P is not here. Otherwise, we make it and then we find that the standard program is there. So there is no standard program. Now I'm going to write a program. Given a number, it will tell you whether it is special or not special. So I'm going to write this complete program. It is not that difficult. Whatever I have written up, you just copy it. Whatever I have written, just copy it. And I'll tell you how to convert it into.
So I will just paste this. Now start with me. Please see here, everyone. Block XU mod X by special PX. Please see here, special PX. X is number which is being, read by this function. So block XU unit wala part iska aa gaya. So I put it, remove the dollar sign. Then XT truncate. Here again, I put the dollar comma. Sum, again you remove this dollar sign. Dollar sign is not required inside the block. In block you can have always commas. Even if you want to change a line, it doesn't matter, you can change the line also. If X is equal to this, then print, special print, and then whatever is there. You see bracket, one bracket is missing, I'll put one bracket here. Now it is closed. Let's see if it is working. Yes, it is working. P, now give me a number, 29. It says 29. All right, 29. Is special word is coming because we are printing it. Normally you see your prime key does not says that it is prime. It says that true or false. So just remove this print. You here return, and else return false. So what is special 29? Very good. So you can check any number, 34. Now, trouble with the special number is, there is a big trouble in this. What is that trouble? Can anybody tell me the trouble in this? The special numbers are only 2-digit numbers. They are not beyond that. So we have not checked it whether it is a 2-digit number. So we need to check whether this number is a 2-digit number or not. So we'll make certain changes here. So what I can do is, I will make, if X is equal to sum plus product, here I will make a change. Please copy it because you may not lose it. This is a better version I'm going to write. I wish to check whether that this number is 2-digit or not. So I will write here X is equal to this and X is greater than 9 and X is less than 100. If it is there, then only do this. अगर इसमें से एक भी condition, if any one of the condition is not satisfied, then please come out of it. All right. So let us see special P. If I write 45, it says false. If I say, अभी आपके सामने एक हमने 29 check की थी, it is true. If it is 291, then again it is false. So it takes care of that logic also, that the number should be a 2-digit number. Any number greater than 9 and less than 100 will be a 2-digit number. It is being checked at this level. Right? So this is how we can do it. We can do everything with the program. All right. Then next is interesting and very interesting. I'm going. This is what's special. Now I want to see where these special numbers are actually located. Where are they? Are they in a certain point of, in a certain place in the graph, or throughout 1 to 900? I mean 9 to 99 they are distributed. We would like to see. So what I will do is, I have true and false, which makes me makes little difficult to plot. I will make certain changes here and then I'll try to plot. ये देखिए, कुछ चेंज ज्यादा नहीं करना है. रिटर्न की बजाय, ट्रू की बजाय इसमें रिटर्न 1 कर लो, सो दैट ग्राफ बिकम्स इजियर, एंड फॉल्स की बजाय 0 कर लो. आप चाहो तो नंबर भी रिटर्न कर सकते हो, और यहाँ स्पेशल पी की बजाय पी को नहीं टच करते, यहाँ क्यू ले लेते हैं. यहाँ
ठीक है, 0 1 दोनों हमारे पास तरीके। मैं आपको दूसरा भी करके दिखाऊंगा, रिटर्न हम नंबर भी कर सकते हैं। आई कैन डू दैट आल्सो, बट लेट्स सी, दिस इज इजियर। सो now I'm going to make points. How to make points? You know, make list, my standard method. And in the standard method, we write first circular bracket, then square bracket, then T, and then you have to check every number, special Q, whether it is 0 or 1, special QX, and then T varying from, see, if you give varying from 1, it will give 0 0. Better you start from 10 and finish it at 99. Right? So let us see what kind of points are. एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक आ गए, 0 0 0 0 0 0 सब 0 आ गए। क्यों? Why all are 0? You should get, देखना 29 पे भी 0 आ रहा है? नहीं, 29 पे भी 0 आ रहा है। So there is some trouble in this. क्या ट्रबल है, चेक करो। ये वाली कंडीशन एक बार हटा के देखे, इससे तो नहीं आ रही गड़बड़। स्पेशल क्यू एक्स है ना, 29 पे अभी भी 0 आ रहा। ये वाला ठीक कर रहा है काम, ठीक कर रहा है। तो इधर क्या प्रॉब्लम? स्पेशल क्यू एक्स, मेक लिस्ट में हमने स्पेशल क्यू एक्स ही लिखा है। ओ, यू सी हियर आई हैव गिवन एक्स, टी देना है। अभी चला ये भी चेंज कर दे। And x is greater than 9 and x is less than 100. So you will yes. Let's see, 29. Okay, that's beautiful. You replace it by $sign, and then you have a standard way of plotting wx draw 2d, and in the bracket, circular bracket, you have to write points because these are the discrete points. We should not use the word discrete, which I was using. For plot, it is discrete. For draw, it is points. You see, it is plotted here, 0 and 1. ये 1 आपके ऊपर आ गए हैं और 0 है बीच बीच में से। देखिए 19 गायब है, यहाँ से 29 गायब है, यहाँ से 39 गायब है। I will show you in a different way. You can easily see it. Just change this range. Y range is equal to, आप यहाँ पर दे दो -1 से 2. So graph will be little bit. So here 19 point, here 29, 39, 49. Here it is, I think 59, 69. Every 60, every this 9 wala is a special number. So see how beautifully you can compute it. The only thing which I wanted to tell you is if you have additional condition, please put them here. Please put them at a proper place. अभी हम और भी सीखेंगे वो proper place पे हम कैसे लगाते हैं। और जब भी कभी हमें if we want to fetch out digits, use mod and truncate method. That's a beautiful method. You can easily fetch out digits of them. अच्छा, इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। आपने एक देखा होगा, एक हर जगह होता है ये नेक्स्ट प्राइम। आप कोई भी नंबर दे दीजिए, देखिए 7। नेक्स्ट कमांड एक बड़ी मशहूर है, एक प्राइम पी जैसे मशहूर है ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट 7। आई थिंक नेक्स्ट ऑड भी होगी इनके पास, नेक्स्ट ऑड नहीं, नेक्स्ट ऑड, नेक्स्ट इवन है नहीं होगी, next prime. So with this motivation, what I will do is I'll try to find out next special number. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर हम ये लिख पाए। Let us try. इसको ट्राई करते लिखने की। अगर लिखा गया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा गया तो कुछ तो लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
So I put this equal to sign and then I write block. अभी सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि कहां से मैं शुरू करूं, चेक करूं। आपने मुझसे कहा कि एक नंबर बताइए 20 से ऊपर कौन सा स्पेशल पहला स्पेशल नंबर आ अबाउट 20, so it is actually 29. So what I will do, I will start my loop for say I is equal to, or I is equal to x हमारा उसने दे दिया, हमें x+1 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा मैं। अगर उसने मुझे बोला 19 के ऊपर चेक करो तो मैं 20 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊं। सी बेसिकली इट इज अ 2 डिजिट नंबर, सो अगर वो 10 भी बोलता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे अगर उसने मुझे 10 नंबर दिया है तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे 99 तक जाना। So even if I add 99, that is 99 is the worst case, but the best is 89. 89 से आपका काम चल जाएगा। 10 plus 89, 99 आएगा। So I'll make on the safer side 90. But you have to give 2-digit number. If you want to give 1-digit number, then I'll take x I is equal to x plus 1 through 99. I will take like this. लेकिन ये लॉजिक बहुत पुअर लॉजिक है। We will improve this logic little later, but let me run this program first. Special P. If this is true, special P क्या लाए हम? X लाए ना? X. If this is true, you want to write it otherwise, then return X. X हमारा नहीं, return X नहीं, return I. आप एक बढ़ा के चल रहे हो ना? If I, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। I is equal to F, then return. Okay. ये हो गया block. Let us see if it is working. एक बार मैं चेक आ रहा है। Next underscore special. Let us see 20 से ऊपर वाला कौन सा है? 29. Absolutely correct. So this is working. The only problem with this is if I put it 2, it gives you 19. It is giving the right answer, but mathematically speaking, इसको पता नहीं चलेगा कि कहां तक जाना है। देखो अगर मैं 99 दे देता हूं तो ये डन करके बाहर आ गया, इसको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ इसके साथ। ये अपना घूम घाम के आ गया, इसको कुछ नहीं मिला क्योंकि स्पेशल पी ने रोका हुआ है। स्पेशल पी ने इसको रोका हुआ है कि आप 2 डिजिट नंबर से ऊपर नहीं जाओ, इसलिए ये डन करके वापस आ गया। नाउ दिस is not very good way of programming. I will improve it. I'll tell you what logic you should use so that it becomes better. I'll copy it here and write the same thing here. See, instead of writing through, if I write while this your number I remains less than 99, it is better. This is a better way of I is equal to x plus while I remains. Next, or special. Then you put it is working. This is a better way of programming. Rather than running the loop and exiting in between, you should give command in a proper way that you want to run this whole entire program only for 2-digit places. So you should give it I less than, not 99, I less than 100. So if I write here 87, then next is 19. If I write 97, the next is 19. Absolutely. If I put less than 99, then it won't. So take care of this. This is some good idea. You can remove this also. While की जगह unless भी कर सकते हो. Only the thing you have to do is क्या करते हैं हम लोग? If you remember, we have to change the sign. If you want to make it while की जगह unless. So unless I is greater than, unless I becomes greater than 90. So right, this is also.
So these are the better way of programming, wherein I have shown you how you can use through, how can use while, how you can use unless in a practical way by finding out next underscore. This is a good logic which you can keep track record of it, and you can teach in any language. अगर आपको दूसरे में बनाना है तो दूसरे में बना सकते हो, mathematical. Okay. So now I come to gold back. Okay. These if you do these conjectures, believe me, if you are ready, if you are able to implement it in other languages, which means that your command over the language is now settling down. It is. So this Goldbach conjecture is a simple, very interesting conjecture, and it is one of the oldest and best known unsolved problem in number theory and entirely mathematics. There are a lot of conjectures related to Goldbach. It states that, what is the statement? It states that every even whole number, please you may write down, every even whole number greater than 2 is the sum of 2 primes, prime number. We can show it, nothing. Now, this conjecture has been shown to hold for all integers less than 4 into 10 raised to the power 18. इतने तक लोगों ने कंप्यूट कर दिया है, बट थ्योरम नहीं प्रूव कर पाए. इसके बियॉन्ड कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं. यहाँ तक people have shown that all even whole numbers can be expressed as sum of 2 prime. और एक नहीं कई तरीकों से. So despite considerable effort, it is still unsolved. So let us try to see what is the logic of writing this, how we can write. I'll give you a small example. Suppose I have a number greater than 2, I have to take any number. So I will take, say, I take 4. 4 is a number greater than 2, can be expressed as the sum of 2 prime numbers. So 2 plus 2. If I move to 6, it is 3 plus, and 8, you have 3 plus 5, and then other combination is, or other combination is not out there. So we will try to make a function and see that what kind of, I'll write here and I'll do it through computer. Let it find Goldbach. So I'm going to make this block. Okay. So for I is equal to 2, I am taking 2 because 1 is not a prime. So not prime, not composite. So I will not take up this through x. And I'll try to find out. I'll try to find out if prime p आपका हो गया I लिया ना मैंने, prime p I and prime p x minus I. अगर ये दोनों x minus I, अगर ये दोनों जॉइंटली ट्रू हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको एक काम करो भाई, if को ये ब्रैकेट, because it's a little big. If prime pi and prime p x minus I both are true, it means that both numbers are prime. Then print, print करता भी है कि नहीं, x I and x minus I. Let us see what is happening, and then we will decide what to change. Okay. Program is ready. Let's see. Yes, it is working. Hold. Working or not working, that I don't know. ये तो देखना पड़ेगा. Hold back. कोई नंबर बोलो. कोई नंबर लगा के देखते हैं. क्या चाहिए मुझे?
अभी हमने ये कंडीशन नहीं लगाई है कि ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए, ये अभी हमें लगानी पड़ेगी। गोल्ड बैक 8, so gold back 8, it has two combinations, 3 and 5, 5 and 3. I don't want 5 and 3 if 3 and 5 is there. No problem. I will remove that one. So let us see 18 के कितने combinations है. 18 gives you 5, 13, 7, 11, 11, 7, 13, 5. I'm not interested in these last two. So what I will do, instead of going beyond, if I go beyond 7, it doesn't matter. It is not of no use. So instead of going to 18, I will stop myself to 9, half of it. So that other half is not required. So make it half. Let us see. बिल्कुल ठीक है. So if you want to know gold back of 28 are these. Gold back of 100 are so 397, 1189, 783, 29, 71, 41, 59, 47, and 53. So gold back conjecture, whatever it is saying, is perfect. Any even whole number greater than 2 is sum of two prime numbers. ऐसे मानेंगे नहीं. अभी हम लोग को बहुत चीजें इसमें इम्प्लीमेंट करनी है. तो अभी मैं एक आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि एक तरीका तो यह है कि गिवन ए नंबर आई कैन मेक इट इवन. It doesn't look nice. I will not make it even. I will check whether that number is even or not. That is a better way of programming. So I will copy this, Control C, and paste. And here for I is equal to 3. Now I will say run this program if unless this x is your even number, otherwise don't run. So x mod 2, if this is equal to 0, if it is divisible by 2, then you go ahead, otherwise बाहर आ जाएगा false कह के. ठीक है, let us run it and see if it is doing. देखते हैं. $sign लगा लो भाई. गोल्ड बैक, न्यू गोल्ड बैक है ये. गोल्ड बैक न्यू वाला है. इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव गिवन 13. ये नहीं दे रहा मैं इसको इवन नंबर, फॉल्स इसमें बोल दिया फॉल्स, क्योंकि इसको मिल गया कि ये 2 equal to नहीं हो रहा. बट इफ आई गिव 14 देन इट विल गिव द परफेक्ट. सो आई नीड फॉल्स. अगर फॉल्स लेना फॉल्स ले लो, जीरो लेना जीरो ले लो, वट एवर यू फील लाइक. Problem is, if it is false, then you take care that when you are plotting it, it may create a lot of problems. We will change it at that. Don't worry. अभी ऐसी अभी हमारा इंटरेस्ट हमेशा होता है कि ये जो गोल्ड बैक 14 है, इसमें मुझे ये इसने 2 दिखा दिए स्प्लिट कर. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्प्लिट्स. आई एम इंटरेस्टेड इन द काउंटिंग ऑफ द स्प्लिट. So I will rewrite this program to count the splits, because see 100 मैं यहाँ डालूंगा, गोल्ड बैक 100, तो बड़ा सा एक नंबर आ जाएगा. उसका मैं क्या करूं इतने सारों का. मुझे एक चाहिए बस, कि मुझे ये बता दो कि कितने सारे उसके काउंट आ रहे हैं. सो आई विल कॉल दिस एज गोल्ड बैक. क्या बोल दें उसको, गोल्ड बैक ही बोल दें. आइटरेशन कितनी हो रही है ये बताएगा. ठीक है. So you know the logic. Logic is simple, that if it is true, then instead of printing, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं break कर देता हूँ so that it is visible. Then for this, then print की बजाय ये क्या करे, ये हमें print ही कर दे. अगर ये है तो print कर दे count. काउंट एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं काउंट को. काउंट इज इक्वल टू, ये इसका आई बन जाएगा आइटरेशन. फॉर आई इक्वल टू दिस. अगर ये ट्रू है देन एक काम करे, 2 काम करने पड़ेंगे इसको. एक तो प्रिंट करे और एक काउंटर को आगे भी बढ़ा दे. दोनों काम कर दे. तो व्हाट आई विल डू इज काउंट इज इक्वल टू काउंट. सो गोल्ड बाशी, गोल्ड x.
लेट अस से 12 का गोल्डबाशी 1, ये डन आ रहा ना, ये डन प्रिंट के कारण आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी मिला। 100 में कितने आए थे देखे थे, याद है? 6 आए थे कॉम्बिनेशन। यहाँ देख लेते कितने हैं कॉम्बिनेशन, 100 करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी हमें 6 ही मिल रहा है। दिस नंबर इज बीइंग प्रिंटेड, ये एक ट्रबल हमें कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई वांट ओनली वन प्रिंट, तो ये ब्रैकेट बंद करो, यहाँ प्रिंट को इससे बाहर नहीं, अब नहीं करेगा ये, अब ये फाइनल वाला। अगर आपको ये 2 बार भी 6 नहीं पसंद आ रहा, यहाँ रिटर्न और अच्छा हो। अब एक ही बात, फाइन। So Goldbashi is now ready. This Goldbashi, what it does it, you give it a number, say मैं देता हूँ इसको एक नंबर 1000 दे देता हूँ, 28 कॉम्बिनेशन, 10,000 दे देते हैं, 127 कॉम्बिनेशन, कंट्रोल एस कर लें कहीं हैंग हो जाए तो, देन 5000 करके देते हैं, 76 कॉम्बिनेशन। You want to see it, you put it here, you will get all combinations, so you can enjoy with this. अभी मुझे एक चीज बताओ, माई क्वेश्चन इज, अगर इसको हमने इवन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा? अगर इसको मैंने 51 दे दिया तो क्या होगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? इसलिए 0 आएगा कि काउंट 0 तो इसका हाई है, ये जैसे ही इनिशिएट करता है, गोल्डबैशी को जैसे ही हम कॉल करते हैं, काउंट को ये 0 करता है, और ये इसको मिलता है if mod x/2 is equal to 0 then do this, otherwise सीधा return 0. So that is again fine. I am happy with this, that it can tell you bhaiya this is not a even number, it is we are making it as a 0. If you want to put it only the number, then you can replace it by x also, it doesn't matter, I can always do that. पर ये ठीक है, 0 से ग्राफ अच्छा बनता है। ओके, एक काम करते हैं, गोल्ड बाश कंडक्टर को जरा विकिपीडिया में देख ले जाओ, ये दिया हुआ है, गोल्ड बाश कंडक्टर इन नंबर थ्योरी असर्शन एवरी इवन काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ये ज्योमेट्री में भी यूजफुल है, कई जगह यूजफुल है। मैं तुम लोगों को आई विश टू शो यू इन विकिपीडिया में इसलिए दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ग्राफ, ये नंबर ऑफ वेज टू राइट एन इवन नंबर एन एज द सम ऑफ टू प्राइम, 4 से लेके 1000 के बीच में ग्राफ स्टार्ट्स लाइक दिस एंड मूव्स लाइक दिस। यहाँ पर ये इसकी विड्थ बड़ी होती जा रही है, ये इसने और 10,000 कितना यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख तक ले गया, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो ये इस तरह से आ रही है। लेट अस सी इफ वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ, ये हमारा टारगेट है, गोल्ड बाची से ही निकलेगा, ठीक है, डोंट वरी। सो वी विल डू इट विद द गोल्ड बाची पॉइंट्स, make list T, then your gold bashi T, T varying from 1 to 10, छोटा ही करके देखते हैं, पॉइंट हमेशा छोटे करके देखा करो, गोल्ड बाची चल नहीं रहा भाई, गोल लिख दिया, so you got it, it is working, so I will replace it by $sign, and then my command wx draw I take because in plot it connects the line, in draw it does not correct. Even if you take discrete points also, then also it connects. So I avoid that. Okay. देख, plot is there. So just increase the points, you will get a clear picture. 1000 तक का plot. Wow. So you have started getting this.
है ना, 1000 तक मैंने प्लॉट किया है। अगर आप उधर देखो जाकर गोल्डबाची में, ये देखिए ये इसने किया हुआ था, देखते हैं ये कहां तक प्लॉट करके आया है। इसने भी 1000 तक ही प्लॉट, इसने भी 1000 तक किया है। और इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। मिनिमम पॉइंट 10 पे है, ये देखो यहाँ, और इसका यहाँ 50 के आसपास। लेट अस सी आवर ग्राफ। मिनिमम बिल्कुल ठीक है, देखो 10 के आसपास है, हाईएस्ट 50 तक है। इफ यू वांट आई कैन ब्रॉडन दिस आल्सो, इसको मैं ब्रॉडन भी कर सकता हूँ बाय मेकिंग y रेंज इज इक्वल टू 0 से इसको 60 कर देता हूँ, सो दैट यू गेट एम्पल ऑफ एयर अबव। अभी ठीक है, अभी एयर भी मिल गया 50 तक। ये जो नीचे आ रहा है ना, ये जिस नीचे डार्क लाइन इज कमिंग, एक्चुअली ये डार्क लाइन वो है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर फॉर एवरी अदर नंबर we are taking only even numbers, because otherwise odd numbers जो हैं उनके लिए 0 0 है, so that is why that point is here, don't worry about it. So this is simple. एक मिनट रुकना है क्या, एक बार खोल दो यार, देख लें इनकी कोई प्रॉब्लम तो अभी तक की, फिर इनको फिर एक कंजेक्टर लेते हैं, ट्विन प्राइम कंजेक्टर। हाँ वफा, आदाब। गुरुजी ये जो आईटी वाला ये बनना है डाटा, मैडम मेरे पास जहाँ तक समझ में आ रहा है मैं बना करके ना आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक ठीक करो, ओके ओके। हाँ रिचा बेटा बोलो, सॉरी बीच में कॉलेज सीख कॉल था। हाँ रिचा ने चैट में डाला है। हाँ हाँ, कैन यू प्लीज शेयर दिस लेक्चर। ये लेक्चर लिखने का कारण ही यही है, कारण ही यही है कि ये मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स व्हाई आई डू इन अ वेरी क्लासिफाइड वे, एक एक सेक्शन सब सेक्शन बना के मैं काम करता हूँ, जिससे जब आप पढ़ोगे इसको कहोगे मजा आ गया, एक एक पॉइंट क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चन? ये तो यार ये नोट्स वाली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ी मशहूर है यार। एनी टीचर हु डज नॉट गिव नोट्स इज नॉट परफेक्ट टू टीच। ऐसे ही बोला जाता है। कट गया क्या? मीटिंग कंट्रोल्स कहाँ गए? अच्छा, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन, ऑल राइट, ओके। लेट मी मूव टू द लास्ट कंजेक्टर। कितने बजे तक क्लास है आज हमारी? 5 o'clock तक और 5:30? सब बिजी हो गए लग रहा है। ऑल राइट सर, अप टू 5:30। 5:30, ओके। विल टेक अप प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस, है ना? यस श्योर सर, श्योर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ट्विन प्राइम कंजेक्टर, लेट मी स्टार्ट विद दिस। ट्विन प्राइम कंजेक्टर होता क्या, पहले ये समझना है, फिर इसकी प्रोग्रामिंग। सी ट्विन प्राइम कंजेक्टर, इसका नाम पॉलीनैक भी इसको बोलते हैं, पॉलीनैक, और वी कॉल इट एज पॉली, इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है भाई, पॉलीनैक, पॉलीनैक्स कंजेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जैसे उसको हम 3n+1 कंजेक्टर भी बोलते हैं, हॉट पॉप भी बोलते हैं, ऐसे ही है। इट इज आइदर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में भी ना बड़ा, अभी अभी आपको इसमें बड़े वेरिएशंस भी दिखाऊंगा मैं, और उसको प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है। ये मजेदार चीजें हैं, इससे प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी। ऑलराइट, सो कंजेक्टर सेज दैट it is a number theory. It says that, it asserts that there are infinitely many twin prime numbers or pair of prime numbers that differ by 2. Interesting. There are
infinitely many twin primes or pair of primes that differ by 2. It means that कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम 41, 43 ढूंढ के बैठे हैं प्राइम, तो इसके आगे नहीं होगा, इसके आगे भी बहुत होंगे। आप लाखों में चले जाइए, वहां भी मिल जाएंगे, करोड़ों में चले जाइए, वहां भी मिल जाएंगे। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम पहले छोटे प्रोग्राम बनाए, फिर हम प्लॉट करके देख लेते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पता चल जाएगा हमें। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम ऑन ट्विन प्राइम एक्स। So what I will do is, अगर मैं एक नंबर बोलता हूँ, say how many twin primes, पहले how नहीं बोलूंगा, पहले बोलूंगा what, which are the twin primes less than x. Less than x means if I say which are the twin primes less than 10, which are the twin primes less than 50, ये मेरा सवाल, तो मैं उसके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। So I'm trying to find out twin primes less than x, less than equal to x. So let's begin. For I is equal to, देखिए जब ट्विन प्राइम की बात आती है तो पहला ट्विन प्राइम आपको कहाँ मिलेगा? पहला ट्विन प्राइम मिलेगा, अगर मैं फर्स्ट नंबर ले लूं, देखो 1 अलाउड नहीं है इसमें, 1 इज नॉट ए प्राइम, सो आई बिगिन विद 2 और 2 + 2 करेंगे 4, 2 4 इज नॉट प्राइम, सो 3 and 2 5, 3 and 5 आर प्राइम, तो मुझे मिल जाएगा 5। सो व्हाट आई विल डू इज I will begin from 5. I is equal to 5. ये लॉजिक क्या भी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को जब मैं ये पूरा लिखूंगा। 2 if prime p I and prime p I -2, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो क्या करो भाई, तो प्रिंट कर दो, देन प्रिंट I -2 and I। if अगर ये है, कब तक जाना है, x तक जाना है, मतलब 10 तक जाना है। लेट अस सी, ओहो सम मिसिंग, कहां से मिसिंग हुआ, ये वाला मिसिंग हुआ इसका, ये मिसिंग हुआ, पीछे ज्यादा, हाँ ठीक है। सो एवरीथिंग इज फाइन, आई पुट अ $sign एंड ट्विन प्राइम, लेट अस 5 से कम वाले 3 and 5 दो ही है ट्विन प्राइम। ओके, 50 से कम कितने हैं, 50 से कम ट्विन प्राइम कहां गया, 3 5 एक सेट है हमारे पास, 5 and 7 दूसरा सेट है, 11 13 हमारे पास तीसरा सेट है, 17 19 हमारे पास चौथा सेट है, पांचवा सेट 11 41 40। So these many sets are there. So twin prime are there. If you make it 100, you see you got some. Now, again, I'm not interested in these numbers, which are the prime. I'm more interested in the count. How many are there? So I will make another program, twin prime count of x. All right. And I will copy this everything from here, Control C, and make changes here. What changes I am going to make? See, for I is equal to 5 through x, मुझे काउंट करना है। काउंट करने का मतलब समझ रहे हो कि मुझे काउंट करने के लिए काउंटर चलाना, एंड काउंटर चलाने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा याद रखो उस काउंटर को 0 करो, कर दिया। अब अगर ये ट्रू है तो देन दो काम करें, क्या क्या करें, वो काम क्या करवाते हैं हम हमेशा, एक हम काम कराते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 करे, और दूसरा हम इससे कहते हैं, दूसरा क्या कहना है, अभी फिलहाल प्रिंट करवा, वो बाद में देखते हैं, प्रिंट काउंट, वो और चेंजेस करेंगे।
तो ट्विन प्राइम सी क्या था आपका 100। देखिए कितने आते हैं, इसने कितने बताए, लेट अस 8 बता रहा है, 8 है, तो यहाँ पर 8 है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now problem is that it is giving number, एक ब्रैकेट यहाँ बंद कर लो, पीछे से एक कम करो, तो फाइनली ये प्रिंट करने के लिए जाएगा। तो अब देखते हैं, अब ये नंबर नहीं काउंट करेगा, सीधा आंसर 8। जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है, the situation is you get, you can replace print by return, that's better one, return, so that there is no echo and it returns you the, yes, beautiful. So twin prime C 100 is ready. All right. What I have done is I have created the counter also, and in this this counter is being returned. So I have avoided all kinds of return printing and all. I am now on a very safe side. अभी एक छोटी सी बात करते हैं हम, आपको इसी की वेरिएशंस में बताऊंगा, पर पहले ट्विन प्राइम को एक बार फाइनलाइज कर ले, फिनिश करो। सो काउंट हमने कर लिया, लेट अस ट्राई टू सी मेक लिस्ट। more and more exercise you do, more and more things you pick up for your student, they will be happy to compute all this. Twin prime T varying from 1 to my always my this procedure is to do it for a smaller number. So it is working. Next is I will make WX draw 2D. What I have to draw? I have to draw the points. Yes, discrete. I'll see if they need, if the x-axis and y-axis. Now make it 100 and replace it by. Yes, good. So this means that जो twin prime है आपके, let us see. I'll try to explain. 0 से certain number में भी 5 तक ये सब 0 है। जब हम उसके आगे जाते हैं तो 1 उसके आगे अगर आप देखो 10 से पहले और यहाँ तक आपके 2 हैं, फिर वो नंबर बढ़ने लगता है, फिर ये बढ़ता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में से 20 to 30 all are 4, फिर बढ़ता है। So if you want, I can show you what exactly is happening here. Here you can see, इसको सेमीकोलन में डाल के देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। You see 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 0, 4 0, 5 6 7 के लिए 1 है, 7 8 9 10 11 12 13 तक ये 2 है, फिर 13 से शुरू होके 13 14 15 16 17 18 तक ये 3 है, which means that up till 18 there are only 3 actually पीछे से 2 उसको मिल चुके हैं, 2 तो उसको मिल गए थे 12 तक, लेकिन उसके आगे जब हम गए 13 14 15 16 17 चेक करने तो हमें एक ही मिला, वो कौन सा मिला? वो मिला हमें 15 and 17 वाला, है ना। 15 17 वाला जो थर्ड हमें मिला वो इसने यहाँ आके काउंट किया जब वो 17 पे पहुंच गया। So like this it goes on, you can count as many as you want. So these are called as the twin primes. ठीक है, कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? uh, 9 और 11 है, 11 तक तो हो गए ना, और उसके आगे 11 and 13 जब आएगा, जब हम 13 को इंक्लूड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटेशन मेरे हिसाब से ठीक है। 14 के आने से कुछ नहीं होगा, 15 के आने से कुछ नहीं होगा, 16 के आने से नहीं होगा, 17 के आने से 15 17 नहीं बने इसलिए नहीं हुआ, 18 के आने से नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 19 एंटर करेगा
तो 17 and 19 एक नया पेयर आ जाएगा, so it becomes 4. That is why it becomes 4. Perfect, एकदम perfect है, and the graph is also fine. So these are called as twin primes, and you can देखो, अगर आप इसको अब एक खेल कर सकते हो, ये तो मैंने तुम्हें दिया ही है. Let us see between 100 and 10,000 what is the position of twin primes. It will take time, don't worry. Twin primes यहाँ पे भी है भाई, हर एक के पास twin. कहीं ऐसा नहीं है कि हमें twin prime नहीं होगा. 100 to 1,000. If you want, I can check little more, little higher. 1,000 से लेके मैं चेक कर देता हूँ. 1,000 से लेके 1,500. थोड़ा और टाइम लेगा. Yes, there is no space which is empty. So twin primes exist. और सीरीज में कुछ और मैथमेटिशियंस ने काम किया. ट्विन प्राइम तो उन्होंने बोला, ट्विन प्राइम मींस wherever the difference is 2, है ना. It means that 11 and 13 की हम बात कर रहे हैं, 17, 19 की हम बात कर रहे हैं, the twin primes. ये ट्विन है मतलब they are twin brother sister. एक मैथमेटिशियन और लेकर आए cousin primes. Now what are these cousin primes? Cousin primes are with a difference of 4. So let's take an example. 3 and 4, 3 and 7 are cousin primes. The same conjecture runs for cousin primes also. So let us take, instead of twin prime, I'll make it for cousin prime. इसी पे change कर दूंगा final वाले में change करके बना दूंगा. Control V. So final cousin prime में I -4 है. I think you would like to see what are the cousin primes, है ना. वो देखते हैं, पहले देखोगे नहीं तो फिर मजा नहीं. तो ट्विन प्राइम को ये वाला कॉपी करते हैं प्रोग्राम, कंट्रोल इसको चला. कजन प्राइम आपको दिखाना भी आना चाहिए कि बच्चे क्लास में पूछे जी करके तो दिखाओ कजन प्राइम क्या है. तो लेट अस I -4 होना चाहिए, and you have here I. Let us run. So you have here cousin prime, you write cousin prime and you write a number. कितने से नीचे मांग ले? 50 से नीचे. कितने cousin? So they are all cousin. 3, 7, 7, 11, 13, 17, 19, 37, 40. Good. And we can count them also with the same logic what we did earlier. So cousin prime, count. Count करना है आपको. I -4 हमने किया. Count. So ठीक है. I think everything is fine. Cousin prime C, and then in the bracket you write 50. You have an answer. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have 6. Cousin prime is also found. It is working. If you wish to plot it, do nothing, just copy it from here. ये जो आपने बनाया हुआ है, यही लॉजिक को पूरा कॉपी करो. Copy it, and instead twin here write cousin. कजन भी खूब है. 1000 के बीच से लेके 1500 के बीच में सब जगह कजन है. कहीं ऐसा नहीं है कि कजन नहीं है. So everywhere you will find cousins. So if a number exists, a prime number है तो उसका कजन भी है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक वर्ड भी इन्होंने यूज किया है, सेक्सी प्राइम. अगर 6 का दे, ये भी एक आपको नंबर थ्योरी में मिल.
So finally I come to one more this and then I will take up your difficulties. एक और छोटा सा लॉजिक करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड प्राइम्स हैं, ये अपने कजन में नहीं होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 23 इज अ प्राइम नंबर, राइट? इसका कजन कौन है? Who will be the cousin of 23, 21 and 25? Both should not be prime. So 23 is isolated prime, right? The next isolated prime number is, I think, 37. 37 का जो younger cousin है वो 35 है, which is not prime. और 37 का जो elder cousin है वो है 39, which is again not a prime. So we call 37 as a isolate. So let us try to find out if isolated primes exist or not. कि खाली ये बस 2-4 नंबर तक ही अवेलेबल है हमारे पास। So I'm writing the logic of isolated prime. ये भी इंटरेस्टिंग लॉजिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, but it is good now your level is up to that. So block for I is equal to 5 true. जहां तक जाना हमने x तक do. अभी do में बहुत सारी चीज। If in the bracket prime p, अभी देखिए हमारे पास अगर हम किसको चेक करने वाले हैं, से आई वांट टू चेक 23, तो 23 को अगर हमने चेक करना है तो p -2 एंड p +2 करना पड़ेगा, i -2 और i +2, बट since our method is little different, we normally take that x से नीचे होना चाहिए, so I will check prime p x -4, ये फॉल्स होना चाहिए सबसे छोटे वाला, एंड प्राइम p x प्राइम p x -4 और प्राइम p x, ये भी नहीं प्राइम होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए मेरे पास? एंड प्राइम p x -2, देखो मैंने ये सब सही लिखा है, ये ट्रू होना चाहिए, तो इज इक्वल टू ट्रू नहीं भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा, इट विल वर्क। नाउ प्लीज सी इट अगेन। let us assume that I am talking of 21, 23, 25. So your number is this 25. So 25 से कम, यानी कि मुझे चेक करना है 23, सॉरी हाँ 21 हो गया, तो 20 यहाँ पर मैंने पास किया है नंबर 25, so this is 21 should not be prime, fine, and मैंने यहाँ पास किया हुआ 25 पास किया तो 25 भी फॉल्स है और 23 इज ट्रू, सो 23 इज आइसोलेटेड। बिल्कुल ठीक है ये लॉजिक ठीक लग रहा है मुझे। लेट अस रन इट एंड चेक इट। ओहो क्या हुआ, देन तो लिखा ही नहीं इसका देन तो लिख दो। तो जोश में आने से ना गड़बड़ हो गई है। -4 x -2 ये हुआ, ये इसका हो गया ब्रैकेट, ये किसका ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ठीक बना हुआ है, हाँ ठीक दिख रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज वर्किंग। So now I write isolated of 25। कौन से आए देखो, ये आ गए तो हो इसने बार बार लिख दिए। बार क्यों लिख दिए? इसने बार चेक करना शुरू कर दिया उसको। कोई बात नहीं है, लेकिन इसने पकड़ लिए हमारे प्राइम, वो देखते हैं क्या गलती कर। क्या गलती की हमने? फॉर ब्लॉक फॉर i is equal to 5 through x, okay?
if prime p x minus 4 is equal to false and this prime p x minus 2, अच्छा x को भी false लिया, इसको भी लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद किया है यहाँ पर, इसका if का बंद कर दिया, then print बार बार क्यों, एक ही नंबर को इसने इतनी बार क्यों लिख दिया, then print x minus 4, ये ब्लॉक में है, फिर से करके देखो, इसमें दोबारा से कितनी बार चेक करके आ गया, बहुत बार चेक, ओके if prime p x minus 4, अच्छा सॉरी, हाँ इंडेक्स तो हम आई चला रहे हैं, तो चेक उसको करा रहे हैं x को, ठीक है, now if I make it here say 100 लेके देखते हैं कितने हैं isolated prime, बिग लेंथ आई थिंक, वाह बहुत सारे हैं, देखिए 21 25 is not prime, 23 is prime, their cousins are not prime, so there this is isolated prime, 35 37 का cousin है 35 और 39 दोनों prime नहीं है, so it is isolated prime, so ये ऐसे हैं, इनके भाइयों से बनती नहीं है, तो ये isolated 95 99 they have different behavior, बनती नहीं है नहीं बोल सकते, but they have different behavior, ठीक है, so they are isolated, और isolated prime exist करते हैं बहुत बढ़िया से मालूम, आइसोलेटेड पॉइंट, इनको मैं काउंट भी करके दिखा सकता हूँ, इसको काउंट कर लेते हैं, आओ 1 मिनट का काम है, लेट अस राइट इट अगेन दिस प्रोग्राम, अब तो तुम माहिर हो गए होगे, आइसोलेटेड प्राइम काउंटर चलाना है हम लोग को, तो काउंटर कैसे चलाते हैं, यू अंडरस्टैंड, मेक इट ए काउंट हियर, काउंट इज इक्वल टू 0 डालो, कॉमा, आगे जाओ, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, देन काउंट is equal to count plus 1 कर देते हैं, और क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे मत करो, ठीक है, ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लो, कॉमा डालो और रिटर्न काउंट कर, ब्रैकेट देख लो सब चाहिए, ओके, आइसोलेटेड सी, and here you give 9, चेक करो ऊपर 9 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एब्सोल्युटली राइट, अब आपके पास प्लॉट करने के लिए आ गया सामान, कि इसको प्लॉट करके देखते हैं ये है कैसा, सो आई विल पिक अप ऑल दिस, कंट्रोल सी एंड देन आई विल पुट इट हियर, सो यहाँ पर कजन की बजाय हमने लिख दिया आइसोलेटेड, ओहो बहुत लंबा दे दिया यार, फंस गया मामला, चलो प्लॉट हो, so you get isolated prime also between 1000 and 1500, let me reduce it 1 to 100, yeah, so isolated primes are there, there is no point where there is nothing, it is there, हर पॉइंट पे आपको एक मिल रहा है, for every x there is a y, and that to a number, big number, it is not like कि 400 के एकदम नीचे आ गए, ऐसा भी नहीं होगा भी नहीं, वो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है,
सो कुछ और बताऊं कि काफी है? अब डिफिकल्टीज ले लें। Thank you so much, sir, for this lecture. Now I request all the participants to write their difficulties or queries in the chat box, and I request sir to please try to address their queries. Yeah. Though you have been doing it during the session also, which is very nice. So I wanted to be a yeah, very because interactive. yeah, exactly it made the session highly interactive. So that was a really nice initiative from your side, sir. I mean, we are really thankful for that. And if Most welcome. still students have any participants have any doubts or queries, please write in the chat box. And I request Vineet sir to enable the chat box. Yeah, it's done, ma'am. Yeah, before I finish, let me tell you one very good thing about this programming language, Maxima. And when you study Mathematica or you study R, then tell your teacher to teach you the recursive function also. Because normally in any kind of interview, they ask you recursive function. What is a recursive? Let me give you an example. If you want to find out the factorial of n, so how do you find factorial of n? See, instead of calling in a loop, we call recursively. What does it mean? I'll show you what does it mean. Say you make a block, n is equal to 0, then if block, just hold on, block, you have, if n is equal to 0, n is equal to 0, then return 1, you can write in bracket or otherwise also it works. Else return, very interesting. See, you have to do nothing. You will call the function itself, fact n. ये छोटा सा प्रोग्राम है, इतना छोटा सा फैक्टोरियल का, कोई नंबर कॉलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया है कि पहले बोला अगर n 0 है तो रिटर्न करो 1, नहीं तो n को फैक्ट n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, वापस भेजो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी इफ इट इज वर्किंग। फैक्ट ऑफ, मान लीजिए मैंने 9 करना है तो ये लीजिए आंसर। फैक्ट ऑफ 4 आपको करना है, सो ये ब्रैकेट fact of 4, so you will get that. So within this, I mean, you can use this for various things. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सीरीज है, यू वांट टू सम द डिजिट्स और यू वांट टू सम ए सीरीज। एक सीरीज है, मान लीजिए 1 raised to the power 1 plus say we have 2 raised to the power 2 plus 3 raised to the power 3. This series goes on. You want to add them, okay, and you want to find out say n raised to the power n, whatever n raised to the power n, n को हमको ये नंबर देना पड़ेगा। अगर ये आप सम करना चाहते हैं using this factorial this recursive function, you can do it easily. How you can do it, I'll show you. 1 मिनट मुझे लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, ये आप अपने नोट्स में भी संभाल के रखोगे। Sum of the series n, suppose you want to do this, and please get it in your other programming language as well, because this is the highest level of programming we should learn. If n is equal to 1, जब ये 1 तक पहुंच जाए तो रुक जाए जाकर, n return 1, else क्या रिटर्न करना है इसको, try to understand what I am doing, else ये भी रिटर्न करना है, दोनों चीजें रिटर्न करनी है, और रिकर्सिव फंक्शन बिना रिटर्न के बनता ही नहीं है। सो दिस इज द स्पेशल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस। तो n into n, आप 1 सेकंड, या जस्ट होल्ड ऑन, लास्ट लाइन मुझे लिख लेने दो, n into n प्लस ss
into n minus. Sorry, something went wrong. Please try again. Okay. Let me check. CV here. Let me know if I can help. So let me see. N into n. Next term हमारी n into n आती है और previous s n minus. ठीक है. Let us see if it is fine. SS 2 करके देख. So 2 square is 4. 4 plus 1 5. 3 डाल के देख लेते हैं. 14. So it is working. 9 plus 4 plus 1. 9 plus 4 is 9. 13 plus 1. So you go on calculating this. If I give a very big number, say I give 10, how long it takes? Nothing. If I give 100, maybe it will take a lot of. 10 100 raised to the power 100 भी इसको करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, तो छोटा ही. So you get this. So you can calculate it. ठीक है? ये ठीक आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है? 4 करके देखें. ये स्क्वायर कर रहा है ना? n raised to the power n नहीं कर रहा है, because I have written here इसको n raised to the power n करना है, तो ये अब आएगा ये n raised to the power n. Now it is fine. अब आया ना? वही मैंने कहा 3 raised to the power 3 करेंगे, 27 3 का करके देखते हैं. 3 का 27 plus 4 31 plus 1 32, और 32 में अगर हम जोड़ें 4 क्यूब कितना होता है? 4 cube is 64. So 4 cube नहीं, 4 raised to the power 4 जोड़ना है. So let us write it here. I will write it for you. Plus 3 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 2 plus 1. ये कितना आया? 288. और इधर मैंने लिखा 4. So perfectly all right. You can use these recursive function also. This is the best part of the programming. If you understand this, I'm sure that you will reach to a new level of. So factorial you can add. You can even sum of the digits. If you want to add even a number, you can use it to sum the digits of a number without giving the length of the number. Because normally student write program wherein length of the number is given, but here you can use this recursive function. Okay, thank you. And now any question, please ask me. Participants, if you have any queries or doubts, you are welcome to write them in the chat box, and sir will pick up the queries. Sir, if I'm getting error in SESGA, then I'm unable to see the next program run. Keep on showing error. Obviously, you cannot see in SESGA when you make a program. I'll show you what happens in SESGA. अगर आपने एक error कर दिया तो वो error हमेशा खड़ा रहेगा वहां पर, वो हट नहीं सकता है. SESGA maxima online. So I write this and I run this. SESGA में आ गए. अब आप मान लो एक्सपैंड की आपने कोई गलती कर दी है, एक्सपैंड की कर दी है. अब ये एक एरर होने से ये गया, ये देखिए ये रोक लेगा, आगे इसका कहीं यूज हो रहा होगा तो वो रोक लेगा, तो एरर तो आती रहेगी. या तो आप बेस्ट पार्ट है कि एक कमांड चलाने के बाद, एक प्रोग्राम चलाने के बाद उसको कॉपी करके यहाँ से हटा लो, फिर दूसरा चलो. तो इट हैज रिजर्वेशन. यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन, क्योंकि अभी आपको सी आर वाले भी बताएंगे, ऑनलाइन उनके पास सॉफ्टवेयर है. मैं भी आर ऑनलाइन कहीं कहीं सिखा लेता हूँ जब कोविड डेज में, बट व्हेन नाउ आई सेड कि नहीं, आई नीड आर स्टूडियो, आई एम टीचिंग इट ऑन आर स्टूडियो. Software is software. This online version is a very restricted one. It can only help you to just compute simple things, not big program. And we are doing best. Let me run this. अगर देखते ये चलता है, ये करके देख लेते. फैक्टोरियल वाला इसको चला लेता तो मजा आए. Let us see. नहीं है, चले. ओह, ये क्या हुआ?
चल पड़ा। फैक्ट 9, सेमीकोलन जरूर लगाओ भाई, हमारे उसमें तो एक बार वो छोड़ भी देता है। फैक्ट 9 निकाल लिया उसने, ठीक है, इट इज वर्किंग। बट सी द आउटपुट देन रिटर्न, कितनी गंदी आउटपुट है, पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या। ये तो हमने रन किया हुआ प्रोग्राम है, तो आपको इजी लगा, है ना। फाइन, आई विल क्लोज इट। कहाँ चली गई आप लोग की स्क्रीन? Should I remove the share? Okay. I am thankful to all of you for listening me and for trying to understand some new things here. Believe me, it is not that difficult. Can you explain again the use of block command in defining a function? See, basically, who is this? Samanvay. Samanvay, if you don't use block, let me share screen, I'll tell you why I use block. It is just my habit actually, and it is a clean programming method. If you don't want to use it, it is fine, but then you should be able to understand. Yeah, ये शेयर नहीं हो रहा मेरे से, स्क्रीन शेयर करने का परमिट दीजिएगा प्लीज। I think Vineet sir, you have to grant permission to the participants to share the screen. मैम ऑलरेडी परमिट है। नहीं, मेरी स्क्रीन चली गई है, हैंग हो रहा। ओके, Let me enter again. Should I enter again? रुके एक मिनट, I will यू leave कैन this शेयर and योर come. स्क्रीन सर। कुछ प्रॉब्लम है, I'll come again. Just hold. See, what I have done is fact n return 1, return this, है ना? So this is working. Even if you don't use block, it doesn't matter. क्या हुआ? चलना चाहिए इसको, क्यों नहीं चल रहा ये? अच्छा, ये तो return not within a return statement needs block. Okay, that is another important thing which I forgot to tell you, that return requires block. So whenever you are when you are printing it simply, then it is fine. Say I write a program fx, say if x is greater than 0, then print, say I write here positive number, else print negative number.
सो ये क्या यहाँ से आया पॉजिटिव नंबर, ये हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, इसको बंद किया, प्रिंट एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर है। ये क्या है, लास्ट वाले की मुझे जरूरत नहीं है, तो कहाँ टर्मिनेट, क्या प्रॉब्लम है। If x is greater than 0, then problem. Sure. F of -9. So you see negative number. Even if I have not used block statement, it is working. But if you are returning something, then you need to have block. तो ब्लॉक स्टेटमेंट का हमेशा हैबिट डालो कि ब्लॉक लिखो। ब्लॉक लिखने से बहुत सारे प्रॉफिट है आपकी। एक तो सबसे बढ़िया है कि आप मल्टीपल कमांड्स जो हैं वो एक के अंदर एक ही डाल सकते हो, ये फायदा हो। ये यहाँ पर दिया भी है, रिटर्न विद इन ब्लॉक इज return is required, the block is required for return. So that's it. I will remove all this. Not confused. Yes. What is the next question? Yeah, Richa. Richa and Abhishek. Abhishek, क्या सवाल हो गया आपका सवाल? सर अभी नहीं हो पाया है, मैंने सर मतलब किया है और कई सारे मतलब स्टेजेस पे सर मतलब नहीं हो पाया था, एरर आया है। एंड सर मतलब मैं आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे मैं उसे देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर क्या मेरी मिस्टेक्स है, बट सर उससे पहले ही आप स्कोर डाउन हो जा रहे थे तो वो कोई काफी बात मिस नहीं हो है, गया है मेरी बात सुनिए अभिषेक। यस आपको सर। आपको मेरे नोट्स मिल रहे हैं, ये जो दोनों फाइल्स है ना, ये मैं भेज रहा हूँ आपको। ऑलराइट, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन यूज देम। तो जहां नहीं समझ आया वो मुझसे आप हमेशा पूछ सकते हैं। सर कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, तो मैं आपको ईमेल करूंगा या फिर ईमेल कर देना या कैसे? मुझे फोन कर लेना, आपके ये दे देंगे नंबर आपको। ओके सर, थैंक यू Don't सर। worry. This maxima people, a lot in this university, lot of maxima people are here. They'll help you out. ओके आप सर। किस कॉलेज में? सर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं सर मास्टर्स कर रहा हूँ एंड अच्छा, मैंने अभी आप छोटे ग्रेजुएशन हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई से बात किया नहीं। है सर। So you can email me. My email ID is ये विनीता राज के पास क्यों जा रहा है? gstuteja@gmail.com. Where I should write? अभिषेक को लिख देता हूँ ना, अभिषेक I don't, हाँ ये चैट आ गया ना, अब आ गया। Okay, so my email ID is gstuteja@gmail. Okay, you can always write. ओके सर, you message me on WhatsApp or sir you write it in chat box? चैट बॉक्स में बेटा भेज दिया है आपको, डायरेक्ट मैसेज आ गया। यस सर मुझे रिसीव हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ रिचा, आप भी कर लो, कोई बात नहीं है। You can note down my email ID or I am messaging you. You can always send. Yes, sir. All right. Otherwise, your these organizers of the program, Yes, they can always help you out. Yes, so we'll send Professor Tuteja's email ID to all the participants, and we'll also send the recorded video to all of you by email, and then you can get in touch with him. Best is you will be getting notes. So where to send notes, Priyanka? No, sir. Actually, this recorded video itself we'll send to the participants. We are recording this video. वो भी बेटा ठीक है, बट ये जो notes होते हैं ना, this your WXM फाइल, ये इसको इनको पहुंचा दोगे तो वो वीडियो में ना कोई टाइम बहुत लगता है सुनने में कि क्या बोला है। डेफिनेटली हम वो भी हम आपको भेजिए, नोट्स भी हम आपको मेल कर देंगे। हाँ, मैं आपको मेल कर दूंगा, आप इनको सबको पार्टिसिपेंट्स। हाँ जी सर, डेफिनेटली हम कर देंगे। ठीक है ना, that will be better, खत्म काम होगा। I make sure that you get notes whatever I teach, so that at least you can visit it again, because it should not be one-time program. It should be full life program. Right, thank you so much. Students have any other doubts?
you can. Okay. So we will send the presentation to you. We'll send the notes to you, and we'll also send sir's email ID. You can get in touch with him. So on behalf of entire Department of Mathematics of RSD College, I extend a very hearty gratitude to Professor G.S. Tuteja for introducing all these important and interesting features of maxima. And sir, you have explained all these conjectures like Euler's conjecture, Goldbach's conjecture, and you have written programs to identify whether number is special number and isolated prime in lot of detail, and you were emphasizing on each and every command. So that was really nice, and I'm very thankful to you for giving this presentation in such a detail. And you also took a participant's query, and that made the session highly interactive. So again, thank you, sir, for taking out time from a busy schedule to be with us and to explain all these points in detail to our participants. I'm sure the participants must have benefited from this lecture. Thank you. I would also Thank you like so to thank you, sir. I would also like to thank technical teams comprising Mr. Vineet and other faculty members for smooth conduct of this day 2 of the session. And I also take this opportunity to thank the IQAC of RSD College for the support. So as I've already said, we'll send the notes to you. We'll also send the recorded video to you by email. And so thank you everyone for being here, and have a nice evening. We'll see you tomorrow at 3:30. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, Thank you, ma'am. everyone. Thank you, sir. Okay. Vineet sir, you can end Yes, now. I am ending the meeting. Yes, Anil sir, क्या कुछ कह रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. You end the meeting.